Hello students, in previous video we have revised the fill-ups and true and false of lesson number 7, and now today we will revise the MCQs and question answers of this lesson. So here is the first MCQ. Birds can fly because they have. So we have learned and revised about the different features of the birds which help them to fly. So birds can fly because they have hollow light bones, very long legs, solid heavy bones, very long tails. So you know that hollow light bones is the correct option. Why? Because जब उनकी बोन्स हॉलो होगी और उनका वेट जो कम होगा जिस उसकी वजह से ही वो फ्लाई कर पाते हैं. एंड वेरी लॉन्ग लेग्स का इससे कोई लेना देना नहीं है. सॉलिड हैवी बोन्स अगर होती है तो वो फ्लाई नहीं कर पाते. एंड वेरी लॉन्ग टेल, और इसका भी कोई उससे कोई लिंक नहीं है. सो hollow light bones is the correct option. Next is the bird that makes a tuk tuk sound while making its nest in a tree trunk is. So कौन सा बर्ड है जो टुक टुक साउंड करता है जब वो नेस्ट बनाता है ट्री में? और यू नो दैट ट्री ट्रंक में कौन से बर्ड का नेस्ट होता है? क्रो, बार्बेट और कॉपर स्मिथ, टेलर बर्ड और पेंगुइन. सो बार्बेट एंड और कॉपर स्मिथ आर द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज क्रो मेक्स हिज नेस्ट on or near the topmost branch. Tailor bird make it nest by stitching the leaves, right? And penguin make its nest on the ground with the help of stones and pebbles. So barbet or coppersmith is the correct option. Next is birds are usually busy and making nest during the month of. So in which month they start making their nest? That is in the month of April. So April is the correct option. And this bird uses stones and pebbles to make its nest. So I have just discussed that is penguin. So यहाँ पर भी penguin option होगा. Yes. So sparrow, quail, barbet and penguin. So penguin is the correct option. Next is the bird migrates to India during winter. So which is a migratory bird, or you can say the bird which migrates to India during winter is sunbird? No. Penguin? No, it is not a migratory bird. Siberian crane and crow. So yes, Siberian crane is the correct option. So Siberian crane is a migratory bird and it migrates to India during winter. Next is your question answers. Answer the following questions in brief. So name 3 birds who work in pairs to make their nest. So कौन से 3 birds हैं जो पेयर में वर्क करते हैं नेस्ट बनाने के लिए? So we have revised that sparrow, sunbird and dove, right? These are the 3 birds who work in pairs to make their nests. कौन से हैं? Sparrow, sunbird and dove work in pairs to make their nest. Next is, why are birds called as aerial animals? So aerial animals क्यों कहते हैं birds को? Birds can fly in air. Birds फ्लाई कर सकते हैं. क्या दूसरे एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं? नो. सो बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज एरियल एनिमल्स. इसीलिए उनको एरियल एनिमल्स कहा जाता है. सो next is list some materials that are used by various birds to make their nests. So कौन से मटेरियल हैं जो बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए यूज करते हैं? सो बर्ड यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स, राइट, लाइक twigs, straws, leaves, cotton and even their own feathers to make their nest. So nest बनाने के लिए अलग अलग चीजें, बहुत तरीके की चीजें यूज करते हैं.
So you can write these things. Next, when and where does a barbet make its nest? So barbet कब बनाता है अपना nest और कहाँ बनाता है? So we have learned that it make its nest during summer season, है ना? तो summer season में वो अपना nest बनाता है. So in summer barbet make its nest और कहाँ बनाता है? In the holes of tree trunk. तो barbet कहाँ अपना बनाता है? We have learned that it make its nest in the holes of tree trunk. जो ट्री का ट्रंक होता है उसमें होल बनाकर वो अपना नेस्ट बनाता है. नेक्स्ट इज लिस्ट सम प्लेसेस वेयर वी फाइंड बर्ड्स नेस्ट. सो बर्ड का नेस्ट आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं और कहाँ कहाँ ये बर्ड्स अपना नेस्ट बना सकते हैं. सो यू कैन राइट एनी प्लेसेस जहाँ पर आपको लगता है कि वो बना सकते हैं. सो आपने लिस्ट बनानी है कुछ ऐसे प्लेसेस की, एंड वी कैन फाइंड द नेस्ट बर्ड्स ऑन ट्रीज. ट्रीज तो सबसे कॉमन जगह है जहाँ पर बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं. ऑन द टेरेसेस ऑफ बिल्डिंग्स, ऑन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड मैनी अदर प्लेसेस. तो वो कहीं भी अपना नेस्ट बना सकते हैं वेयर एवर दे फील safe and secure, right? And next is answer the following questions. Write any 3 features of bird that help them to fly. So 3 features bird के special features that help them to fly. So ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. So first thing is they have hollow bones which make their body light. उनकी बोन्स कैसी होती है? हॉलो होती है, एंड जिसकी वजह से उनकी बॉडी लाइट हल्की हो जाती है. देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स. सेकेंड थिंग दे हैव विंग्स, राइट? उनके पास क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. हमारे पास तो नहीं होते, बाकी एनिमल्स के पास भी नहीं होते. सिर्फ किसके पास होते हैं? बर्ड्स के पास होते हैं, और इंसेक्ट्स के पास भी होते हैं ऐसे तो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बर्ड्स हियर. सो देयर विंग्स आर मेड अप ऑफ लाइट फेदर्स. जो उनके विंग्स बने होते हैं वो बिल्कुल लाइट फेदर से बने होते हैं. एंड दे हैव पॉइंटेड शार्प बोट शेप्ड बॉडी. और उनकी बॉडी की जो शेप होती है वो पॉइंटेड होती है, शार्प होती है और बोट शेप्ड होती है. सो दीज आर द 3 फीचर्स ऑफ बर्ड्स दैट हेल्प देम टू fly. And how are nests useful for birds? So you know that birds makes nests to lay eggs and to hatch them, and they keep their young ones safe and warm in their nests. So अपने eggs lay करने के लिए और अपने young ones को बड़ा करने के लिए वो नेस्ट जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं, और वो उनके यंग वंस को सेफ भी रखते हैं और वार्म भी रखते हैं. कौन? नेस्ट्स. नेक्स्ट, हाउ डज टेलर बर्ड मेक इट्स नेस्ट? सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेलर बर्ड, दैट हाउ इट मेक्स इट्स नेस्ट. सो द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स. बिकॉज इसका नाम ही टेलर है तो क्या करेगा? स्टिच करेगा. किस चीज को? लीव्स को. द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक. अपनी बीक से स्टिच करेगा यूजिंग स्मॉल ट्विग्स एज थ्रेड टू मेक इट्स नेस्ट. स्मॉल ट्विग्स को थ्रेड की तरह यूज करके वो अपना नेस्ट बनाएगा. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स? सो माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स क्या होता है? सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन एंड दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग द विंटर्स. वेरी कोल्ड रीजन में रहते हैं. विंटर सीजन में क्या होता है? बहुत ठंड हो जाती है, एंड दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग विंटर्स, एंड दिस इज नोन एज माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, और इसी को हम माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज नेम एनी 2 माइग्रेटरी बर्ड्स. सो नेम एनी 2 माइग्रेटरी बर्ड्स. मैनी names of many migratory birds are given in your book. You can write any 2 easy one जो आपको easily learn हो जाए. So Siberian crane and flamingo are 2 migratory birds. आप कोई और भी learn कर सकते हैं.
So we have revised the lesson number 7. In next video we will start the revision of lesson number 8. Thank you.